Hello students, myself Suman Shekhavat and I am teaching economics in 12th Commerce English medium in Gromore School, Himatnagar. Student, this is our second video for chapter 1 Graphs and Economics. In our previous video, we learned about the meaning of diagram, the meaning of graphs and importance of diagram and graphs in economics and aspects to be considered while drawing a diagram. And last topic, types of diagram. So let's continue with this topic because in this topic your three diagrams are very important as per our syllabus. So let's start. Topics to be discussed. First is time-based line diagram. As according to the name, it is based on time and it is represented with lines. After that, bar diagram and after that, pie diagram. So let's start with time-based line diagram. Student, as you see the picture which show the shape or slope of a relationship in economics between two variables are often drawn. मीन्स जब हम बात कर रहे हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम की तो क्या होता है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादातर किस वे में शो किया जाता है, शेप एंड स्लोप. दैट द शेप, व्हाट टाइप ऑफ शेप इज अक्यूरिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ स्लोप वी सी इन दिस पिक्चर. सो द लाइन इज ड्रॉन एज अ शेप in this picture and slope is upward slope. So let's take an example. First is demand curve. Demand curve is based on time based line diagram, and then supply curve. Both are you already studies in your previous classes. And if you want to know the size of population in different time periods, you obviously use time based line diagram. And if you want to show the rate of inflation in different years, you are using time based line diagram. And if you want to show the literacy rate in various years, you obviously use time based line diagram, because in these examples mostly the time is using as a base. That means on x-axis we are using time. We are always mentioning in different time periods. It may be day, week, month, year, whatever we take as a time. Okay, let's understand. The independent variable is measured on x-axis and the dependent variable is measured on y-axis. As you see in this picture, students, the horizontal line is denoted with x-axis. Means you can also say that slipping line, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. And the vertical line, which we are saying that standing line, it is represented by y-axis. But what is the meaning of independent variable and what is the meaning of dependent variable? Students, here we take one example to understand independent variables and dependent variables. Like if you are hungry, then that means you can't control your hunger. आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. So this is denoted with independent variables. Means वो independent होते हैं. They must be changing. We can't control on them. Like the same way, years will be changed according to their own. जो साल होते हैं, जो टाइम होता है, वो अपने हिसाब से चेंज होंगे ही. हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है कि हाँ, आपको भूख लगी है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कितना खाओगे वो आप कंट्रोल कर सकते हो. आपको कम खाना है, ज़्यादा खाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो इन द सेम वे दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी प्रोडक्ट की प्राइस की, तो ज़्यादातर हम प्राइस वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. सो
I think you understand the meaning of independent variable and dependent variable. That means independent variable are those variable which we cannot control, and dependent variables are we can control. Okay, let's take an example to understand more clearly. Example is percentage growth rate of India's population. So this is the picture of your time based line diagram, and here first we have to draw the table for that, because in our previous video we know that aspects to be considered while drawing any diagram or graph. First we should need to draw the table. First of all, you need to choose the proper diagram. So it is based on the time period, because here we are mentioning the different years, so we use time based line diagram. And after that the clarity is must be, so here the picture is very clear, and after that you have to draw the table. So first of all we need to draw the two columns. One column is denoted with decade. Decade means जिसको हम 10 साल से ले सकते हैं, हर 10 साल को एक डिकेट हम कहते हैं. सो हेयर फ्रॉम 1951 to 61 द कंप्लीट 10 ईयर. आफ्टर दैट सेकेंड जो कॉलम है हमारा, उसमें है डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज, यानी हर 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है. सो इन फर्स्ट 10 ईयर्स इट्स 21.64. सो आप इसको अपने जो ग्राफ है उसमें कैसे डिनोट करोगे. सबसे पहले तो आपको जो बेस है आपका एक्स एक्सिस, वहाँ से आपको फर्स्ट 10 ईयर का जो हमने मेंशन किया है 1951, वहाँ से एग्जैक्टली आपका स्केल रखना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मैच 21.64 एग्जैक्टली आपका वाई एक्सिस पे कहाँ मैच हो रहा है. तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपका इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे आपको एक डॉट क्रिएट करना है. आफ्टर दैट आपको सेकेंड ईयर के लिए जो आपका सेकेंड दिया हुआ है 10 ईयर्स फ्रॉम 61 to 71, तब हमारा ग्रोथ रेट हुआ 24.80. सो सेम आपको फर्स्ट बेस ईयर जो है हमारा 61 से 71 वहां से लेना है. एंड आफ्टर दैट वो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है वाई एक्सिस पे 24.80, दैट मीन्स नियर बाय 25. So you have to mention the point, and after that you join these points with a line. So as so on, आपको आगे के जो भी years हैं उनको भी सेम ऐसे ही जो हमारा ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से इंटरसेक्ट पॉइंट पे ज्वाइन करते जाना है. और आप देखोगे कि कैसा शेप ड्रॉ हो गया है. इट्स अ कर्व शेप, ये एक कर्व की तरह बन गया है. एंड इसका स्लोप कैसा है, हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्लोप इज अपवर्ड, पहले थोड़ा अप गया एंड देन डाउनवर्ड, फिर वो नीचे आया. जैसे कि हमें पता है कि पहले 21 हुआ, फिर 24, अगेन 24 पॉइंट समथिंग लाइक 66, एंड देन इट्स बिकम डिक्रीजिंग slowly. After that 23, then 21, then 17. So this is showing downward slope. So you understand this thing, but in this diagram you must know one important thing. As I already discussed, you need to write down the source name, as this is very important for your like final exams. You have to mention whenever you are draw any graph, you need to write down the source. Here the source is census of India, यानी कि ये डेटा जो हमने लिखा है, ये डेटा हमें कहाँ से मिला है, वो सोर्स क्या है जहाँ से हमें ये डेटा मिला है. तो हमें हमारा ये डेटा मिला है हमारे सेंसस से, यानी जब भी हमारे देश की जो जनगणना होती है उससे हमें मिला है. सो वी कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द सोर्स ऑल्सो. You understand this? So let's take next topic. The next topic is bar diagram. So first we should know the meaning of bar diagram. Meaning is when a data set is distributed among various sections, and for each section a bar is drawn on a common base such that the height of the bar is proportional to the value
of the variable for the respective section, then such a diagram is called a bar diagram. जैसे कि आपने देखा है when a data set, जब हम एक डेटा सेट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी उनको बांटते हैं, किस में बांटते हैं, अमॉन्ग वेरियस सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तब फॉर ईच सेक्शन अ बार इज ड्रॉन, यानी हर सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बनाना पड़ेगा ऑन अ कॉमन बेस. यहाँ पे कॉमन बेस क्या है हमारा, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन बेस, उसको हम कॉमन बेस कहते हैं. एंड सच दैट द हाइट ऑफ द बार, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे बार की हाइट कितनी रखनी है, इट्स जस्ट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू. अब हमें उसको उतना ही प्रोपोर्शनल करना है जो वैल्यू दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर द रेस्पेक्टिव सेक्शन, देन सच अ डायग्राम इज कॉल्ड बार डायग्राम. सो इट इज जस्ट सिमिलर like line diagram, but we are not creating any line in this diagram. We use bar to mention any section. Okay, let's take an example. Literacy rate of the country in various year. You can also mention this example with the time based line diagram also and bar diagram also. So it is depend on you that which type of diagram you want to choose. What the diagram shows properly your datas, and what is suitable for you, that is only dependent on you. So let's bar diagram generally of three types. First is simple bar diagram. As you see in the picture, there is only single bar to represent any variable. And after that, the second type is cluster bar diagram. We can also say group bar diagram. In this, you see in the picture, like more than one bar is representing on one section. And after that, divided bar diagram. That means we are dividing single bar into parts. So it represents divided bar diagram. To understand in detail, okay, let's understand with first simple bar diagram. First, we should know the meaning of simple bar diagram. A simple bar diagram represent value of only one variable over base. That means जो हमारा simple bar diagram है वो क्या represent करता है, value of only one variable where over base, यानी base के ऊपर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है सिंपल बार डायग्राम. सो लेट्स टेक टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द एग्जांपल फॉर दिस. एग्जांपल इज बायो मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप. बायो मंथली मीन्स every 2 months. In every 2 months the sales of chocolate boxes in a shop, उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर जो चॉकलेट बॉक्सेस हैं वो कितने सेल होते हैं 2 महीने में, हम ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डायग्राम के थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द रिप्रेजेंट योर सेल इन यूनिट, विच टाइप, विच पैटर्न. सो हेयर वी आर यूजिंग ओनली black dark color. Okay, just plain dark color. First of all you need to draw the table, and you need to represent the table in 2 columns. First is month and second is sale in unit. Months जैसे कि हमने यहाँ पे किया है जनवरी फरवरी, because we are taking bio monthly. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And sales in unit in particular months. First is in January, February 35, March, April is 60, May, June is 65, July, August is 40, and September, October is 50, then November, December is 30. But in this example, the source is hypothetical example. That means, hypothetical means काल्पनिक. This is not real database. ये कोई real database नहीं है, कहीं authentic way से नहीं लिए हुए, ये हाइपोथेटिकल है. दैट मीन्स काल्पनिक है, ऐसे ही मन घड़त जिसको हम कहते हैं वो एग्जाम्पल है. सो वेन एवर यू आर ऑल्सो ड्रॉ एनी ग्राफ, यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ सोर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस ग्राफ.
you need to be represent that this is the simple bar diagram, and on x-axis the here you see the first is O, that means origin, जहां से शुरुआत की जाती है. First of all you need to draw the x-axis and then y-axis. X-axis is denoted on horizontal line and the y-axis is denoted on vertical line. So you need to write down the name of the months. This is our time period, and after that sale in unit. You need to mention the all sale unit, like your distance must be appropriate, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Like we take according to our example, जनवरी फरवरी मंथ के अंदर हमारे कितने सेल हुई है यूनिट्स की, 35. So you need to draw a bar for the 35, and after that मार्च अप्रैल में कितना हुआ है, it's a 60. Then your the bar's height should be at 60, and after that 65. So you need to draw your bar's height on 65 particular, then 40, then 50, then 30. So according to sale unit we need to decide our bar's height. Now student, second, clustered bar diagram. Clustered means group. That means we can also say that cluster as a group bar diagram. Okay, let's take the meaning of this. In this type of a graph, a common variable and over a common base are given for more than one section of relatable parameters. That means student, this type of graph a common variable. Here the common variable is the month, January, February, March, April, and over a common base. Common base means we represent x-axis as our base, so are given for more than one section of relatable parameter. More than one section means we can draw more than one bars. So we are presenting three bars. First one is a small size, the second one is medium size, and the third one is large size. So it is the meaning of this. So let's understand with example. This is also like the previous example, bi-monthly sale of chocolate boxes of a different sizes in a shop. That means we take month as same, our previous example, but here the sale unit is divided into three sections. One for the small size, and the second one is the medium size, and the third one is the large size. So our the medium size, large size and small size parameters are different. Like for the January and February month, small size chocolate sold out 30, and medium size chocolate boxes sold out 15, and large size chocolate boxes sold out 25. So on a common base, a common variable, January February, we mention three bars, one for small, second for medium, and third for large. But students, here you note down that we are representing sale unit in three different ways. We are using common dark color for small size, and for the medium size we draw the different pattern, and again for the large size we draw the different pattern. So it is recognized by the patterns. The bar is recognized with their pattern. सो इट इज एग्जैक्टली डिनोटेड विद प्रीवियस एग्जाम्पल. जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में समझा था, हमें बार की हाइट एग्जैक्टली उतनी प्रॉपर प्रोपोर्शनिएट करनी है जितनी हमारी सेल्स यूनिट है. जैसे सपोज स्मॉल साइज आपका 30 है, तो आपको जो आपका फर्स्ट बार है उसकी हाइट 30 तक ही डिनोट करनी है. एंड आफ्टर दैट वो 15 है मीडियम साइज, देन यू हैव टू ड्रॉ द मीडियम साइज जो आपका बार है जिस पर्टिकुलर पैटर्न में ड्रॉ कर रहे हो वो 15 यूनिट तक ड्रॉ करना है, उसकी हाइट 15 तक ही रखनी है. एंड देन अगेन large size it's 25. So it is all the three bars are represent on a common base one variable. That means common base में हमने January February both has included as bio monthly. That means हम यहाँ पे जनवरी फरवरी को एक वेरिएबल ले रहे हैं, एंड देन आफ्टर मार्च अप्रैल को एक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर, एज दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अवर प्रीवियस एग्जाम्पल. बाकी सब इसके अंदर सेम है. वी नीड टू राइट डाउन द सोर्स बिकॉज दिस इज ऑल्सो hypothetical example,
and other things are exactly. Okay student, this is our third type, divided bar diagram. As according to the name, divided bar, that means we are divide the single bar into different sections. First we should understand the meaning of this. In such a diagram, every single value of the variable has subcategories, hence we get division in all the bars which represent a common variable and a common base value. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो सिंगल बार डिनोट कर रहे हैं उसको हम सब कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सब कैटेगरीज कर देते हैं उसके अंदर, और जिससे हमें क्या मिलता है वो हम लोग एक कॉमन बेस वैल्यू पे ही लेते हैं विद अ कॉमन वेरिएबल. लाइक इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग जनवरी फरवरी को अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका ओवरऑल टोटल हमने लिया है 70. दिस इज द कॉमन फॉर लाइक अ सिंगल रूरल एंड अर्बन बोथ आर मिक्सिंग. सो हमने क्या किया है, इस बार को 70 पे कर दिया है, बट वी डिवाइड दिस बार इनटू टू सेक्शंस. हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है 70 को, 40 फॉर अर्बन एंड 30 फॉर रूरल. That means we also denote this in our index side, that sales in rural area are just denote with black plain color, and sales in urban area are draw with pattern. So we represent January February month, we sold total sale is 70, so we draw a bar at the height of 70 and we divided this bar into 40 and 30. Like the same हमने second month के लिए जो मार्च और अप्रैल है हमारा, वो हमारा टोटल सेल होता है 115 and we divided 115 into 80 and 35. So 80% for the urban एंड 35% फॉर द रूरल. इसको हमने एक ही बार में रिप्रेजेंट किया है, बट हमने उसको क्या किया है, सब कैटेगरीज बता दी है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइडेड बार डायग्राम. दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल्स. सो let's understand now student, our next topic is aspects to be considered while drawing bar diagram. As we learned in our previous video that aspects to be considered while drawing any diagram or any graph, but right now we are discuss about bar diagram only. Okay, so first you should remember that all bar should be equal width. Means आपके जो बार की विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, इट मस्ट बी इक्वल, सेम होनी चाहिए. दैट यू नॉट ड्रॉ सम बार्स लिटिल बिट फैटी, लिटिल बिट थिन, यू नो, लाइक आप पतला मोटा इस तरीके से अपने बार्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हो. आपके जो बार्स होंगे वो प्रॉपर इक्वल विड्थ होगी उनकी. लाइक यू यूज प्रॉपर स्केल, proper measurement, and after that you draw any bar. If you are taking 2 centimeter, then it is necessary to use 2 centimeter for each and every bar. समझ रहे हैं, अगर आप लोगों ने अगर एक बार के लिए 2 सेंटीमीटर का विड्थ लिया है, तो हर बार जब भी आप दूसरा वेरिएबल में जो भी नेक्स्ट आएगा उसके लिए अगर आप बार ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको हर एक में वही सेम 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही ड्रॉ करना है एज अ विड्थ. नाउ द सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. दैट मीन्स आप जो बार की लेंथ रिप्रेजेंट करते हो वो कैसी होनी चाहिए, इट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. अदर वेरिएबल मीन्स जो भी हम y एक्सिस पे वेरिएबल्स डिनोट करते हैं, लाइक सेल्स यूनिट जो भी हम डिनोट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली उसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उसकी हाइट. अगर हमने 70%, अगर हमने 50% सेल आउट किया है, तो एग्जैक्टली आपकी जो बार की लेंथ है, जो उसकी हाइट है, वो 50% ही ड्रॉ करनी है. समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ द थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार्स शुड बी इक्वल. अब हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि दैट द विड्थ ऑफ ऑल बार शुड बी इक्वल, उनकी विड्थ यानी चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए. वैसे ही हर एक बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि किसी मंथ के लिए आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया तो किसी में 7 का दे दिया,
किसी में कम दे दिया. आई एम टेकिंग टू मच डिस्टेंस, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आपको जो भी डिस्टेंस लेना है टू ड्रॉ एनी बार, इट्स इक्वल, ऑलवेज बी इक्वल. आपको एक ही मेजरमेंट के साथ में चलना है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, all bars rest on the same line called the base, which usually coincides with the x-axis. That means आपके जितने भी बार हैं वो आपको एक सेम लाइन पे, सेम लाइन मीन्स कॉमन बेस, ओके, जिसको हम बेस कहते हैं, जो हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेम लाइन कह सकते हैं, कॉमन बेस जिसको हम कहते हैं. उसके ऊपर ही आपको सभी बार्स को रिप्रेजेंट करना है, उसी पे ड्रॉ करना है. एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी है, जो स्लीपिंग लाइन आपने ड्रॉ करी है, उसी पे आपको सभी बार्स को डिनोट करना है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऑल वर्टिकल बार्स शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ द डेटा सीरीज. अब ऑलवेज यू रिमेंबर, जो आपने बार्स ड्रॉ करी है इन अ शेप ऑफ वर्टिकल, वो कैसे अरेंज होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट. लाइक जो हमारा हम ओरिजिन मेंशन करते हैं, जो हमारा एल शेप में जहाँ पे एल शेप बन रहा है, जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है, उसको हम ओरिजिन लेते हैं, और वहां से जो लेफ्ट साइड से ही आपको सभी जो हमारे बार्स हैं उनको अरेंज करना है. कभी भी राइट साइड से वो अरेंज नहीं होते हैं. आपको जनवरी फरवरी मंथ लेना है तो जो आपका ओरिजिन होगा, जहां से शुरू हो रहा है, उसके साइड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स लेफ्ट साइड से. Okay, here one note is also for you. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bars are also drawn instead of vertical bars. अब आप लोगों ने कई बार ऐसे ग्राफ्स देखे होंगे, स्पेशली इन कंप्यूटर्स, दैट वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है. जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे बार्स को ड्रॉ करते हैं, वो कंप्यूटर में कई बार वर्टिकल लाइंस पे इस तरीके से ड्रॉ होता है. इट मीन्स जब भी आप अपनी पिक्चर को कुछ रोटेट करेंगे इन अ डिफरेंट मोशंस, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बार्स आपके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ. जो आप वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार्स ड्रॉ करते हैं, और जहां पे हमारा एक्स एक्सिस होता है वहां पे हम उसको वाई बना देते हैं, अदर वेरिएबल्स डिनोट होते हैं. सो दिस इज यूज्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओनली. बट अगर हम अभी की बात करें, हम जो स्टडी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे ही ऑलवेज बार्स ड्रॉ करते हैं. दैट मीन्स वी रिकॉग्नाइज एक्स एक्सिस एज अ बेस वैल्यू. Okay, students, now thank you for watching this video. Stay home and stay safe from COVID-19. Thank you so much. I will shortly come with my next video.